Good evening, future officers. Welcome to EduTap and welcome to another important CT 360 series session in which we cover the most important general awareness and the economics and social issues, current affairs from the examination point of view. So, my dear friends, in these sessions we cover important general awareness and the economic and social issues, current affairs that we are required to prepare for our examinations. So, basically, these sessions are going to be very helpful for all the aspirants who are preparing for RBI, NABARD, SEBI or the banking examinations like IBPS PO, SBI PO, right? So, whatever exam for which you are preparing for, if the current affairs is being asked, let me tell you that these sessions are going to be very helpful for your preparation. Okay, so I hope that all of you have come up in this particular session with complete revision of the previous session, because today again we will be revising the important dimensions and aspects of the previous session. But before that, let me tell you that we conduct these sessions across the three stages. What are the three stages? First of all, we revise the important aspects and dimensions of the previous session. The second stage is basically covering the current affairs of this particular timeline that we have mentioned in this particular thumbnail. After that, we basically follow it by solving the MCQs which are based on these current affairs. Okay, so in these sessions we are not just covering the current affairs, we are also helping you to understand that okay, these are the important things that we need to understand, we need to cover from the examination point of view, by providing you a better understanding that okay, this is the data or the fact and figure, the dimension on which we need to focus while preparing for these current affairs. I hope this part is clear to everybody. And again, welcome to all of you in the today's session, guys. If I'm audible and visible, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session. So many topics today we are having for all of you that we will be covering in the today's session, right? So before that, my dear friends, let me tell you here that we are conducting some important current affair initiatives so that you can prepare for your current affairs for your examination comprehensively. For example, government scheme is really a very important part of your current affairs, and that's why we are having a separate session, also a series for the government schemes that we conduct every Monday, Wednesday and Friday at 10:30 a.m. Now the next part is your perspective 360, where we cover the important parts for the descriptive writing, that how to write a proper descriptive answer, what should be the important element of a good descriptive answer. So that also we provide you through a separate series, that is perspective 360, that we conduct every Monday, Wednesday, Friday at 5 p.m. After that comes your GA plus ESI current affairs, guys. So CT 360 series that you are basically watching right now, these we conduct every Tuesday, Thursday, Saturday at 5 p.m. and here we cover important GA and ESI current affairs. After that, we are having one of the most important Finance 360 series, which is being taken by Kritika ma'am, where we are covering important finance current affairs and the RBI notifications, and that we conduct every Tuesday, Thursday, Saturday at 10 a.m. So please note down these series, as they are really very important for all of you to prepare for your current affairs part of the upcoming examination. Okay, and do ensure that you are following regularly these series, because they are really going to help you in having a comprehensive preparation for the exam. क्योंकि काफी students पूछते हैं कि सर अगर हम CT 360 सीरीज को देखते हैं तो क्या इसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना? लेट मी टेल यू गाइस, आपके लिए फाइनेंस करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो बेसिकली कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे, सो दीज करंट अफेयर सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू to basically reach your final destination that you are aiming for, to become the officer in the desired examination. Okay, I hope this part is very much clear. Now moving on to the very important part of the session, that is the topics that we will be covering in the today's session. तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों that यहाँ पर आपके पहले जो 5 आर्टिकल्स हैं, the people who are preparing for regulatory bodies exams, जो पहले 5 आर्टिकल हैं आपके, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दे आर रिलेटेड टू योर सिलेबस. The topics which are mentioned in the syllabus, उनसे ये topics relate करते हैं. That's why they are important for both phase 1 and phase 2. And the remaining ones are only important for your phase 1 examination. And if you are someone who is preparing for the banking examination, so आपके banking examinations में सिर्फ phase 2 के अंदर, that is the mains exam के अंदर आपके current affairs पूछे जाते हैं. So all these articles are important for your phase 2 examination for the banking aspirants. So आपको अपने examination के according चीजों को cover करना है, काफी जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है? But let me tell you, in these sessions we will be covering all these current affairs very comprehensively, so that अगर कोई भी question इन करंट अफेयर से पूछा जाता है, you will be able to answer them
from the examination point of view. Okay, so before starting with the session, it's the revision time. And today, guys, I'm not having the MCQs for all of you, and sorry, I'm not having the fill in the blanks for all of you. So pointers हैं आज आपके सामने, ठीक है. So pointers के थ्रू हम रिवाइज करेंगे. हमने लास्ट सेशन में कवर किया था नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि सेकेंड एडिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय द नीति आयोग अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. यहां पर हमने देखा जो सबसे टॉप पर वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज ऑफ मिजोरम, दैट इज Nathial. Nathial district of Mizoram is on the top, and the Longding district of Arunachal Pradesh is at the bottom of the index. After that, we moved on to the 17th BRICS summit. So right now, BRICS presidency is with Brazil, and Brazil has hosted the summit at Rio de Janeiro with the theme strengthening global South cooperation for a more inclusive and sustainable governance. ठीक है, तो इस थीम के साथ इसको लॉन्च किया गया. Now let me tell you that next year in 2026 India will be hosting the BRICS summit, that is the 18th summit of the BRICS will be hosted by India. So India will be coming up with its own acronym for the BRICS, and what it is building resilience and innovation for cooperation and sustainability. So this is the acronym for your BRICS, building resilience and innovation for cooperation and sustainability. तो ये इंडिया का acronym रहेगा for the BRICS summit that will be hosted by India next year. Okay, after that, moving on to the two new countries which have basically joined the new development bank. So दोस्तों, BRICS ने अपने लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था. सो न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए दो कंट्रीज को यहाँ पर ऑफिशियली ज्वाइन कराया गया. व्हाट आर द नेम ऑफ दीज टू कंट्रीज? दीज आर कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान. इफ आई आस्क यू that what is that name of the person who is presently serving as the head of the NDB, can anybody tell me that? I told you a very short phrase which is going to help you out in remembering that particular information, that BRICS ship NDB set sail in 2015 comes in dilemma. So dilemma Rozov is the name of the person who is the head of this particular institution. 2015 is the year when the NDB was been established, and new development bank किसका है? BRICS countries का है, right? I hope this part is very much clear to everyone and everybody is able to retain this information from examination point of view. बढ़ते हैं next important part की तरफ. The state which became first Indian state to introduce Aadhaar based face authentication. So what is that name of the state? That is Himachal Pradesh. नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल वाज रिलेटेड टू द नेशनल बायो बैंक. तो नेशनल बायो बैंक कहां पर बना है दोस्तों? सो बेसिकली इसको लॉन्च किया CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने. फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक. नेक्स्ट पार्ट, द फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड स्क्रीनिंग फॉर द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स अंडर द फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम. तो फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के अंदर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को इंक्लूड किया. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेट और UT? दैट इज पुडुचेरी. आफ्टर दैट, द organization which became first private Indian company which has been authorized by InSpace, that it has been allowed to basically do the business of satellite communication services, right? So what is the name of that organization? That is Anant Technologies. तो ये ऐसी पहली private organization बनी है. After that we covered Ja Mata exercise. So Ja Mata exercise will be conducted between India and Japan. That is the right part. मूविंग अहेड, इंडिया के वो टेस्ट कैप्टन जिन्होंने सुनील गावस्कर जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया ऑफ बीइंग द यंगेस्ट कैप्टन टू विन एन ओवरसीज क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? दैट इज शुभमन गिल. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्कोर चेक कर रहे होंगे क्योंकि हमारा थर्ड टेस्ट में स्टार्ट हो चुका है, बट अभी के लिए सेशन पर फोकस कीजिए. उसके बाद यू कैन बेसिकली फॉर द लेजर टाइम यू कैन वॉच दैट मैच. ओके, नाउ मूविंग अहेड, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO कौन बने हैं दोस्तों? साहिल कीनी बने हैं. आफ्टर दैट, सूरीनेम की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, द नेम ऑफ द पर्सन इज जेनिफर गिरलिंग्स सिमंस एंड शी विल बी रिप्लेसिंग चंद्रिका प्रसाद संतोखी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरीनेम. पोस्ट दैट वी हैव कवर्ड द न्यू ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं संजोग गुप्ता. ही इज द इंडियन मोगुल एंड इंडियन मीडिया मोगुल गाइस. संजोग गुप्ता जियो स्टार के CEO ये रह चुके हैं, एंड ही विल बी रिप्लेसिंग ऑस्ट्रेलियाज जॉफ एलार्डिस एज द CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल.
सो आई होप दैट आप सभी को ये सभी इंफॉर्मेशन याद है जो हमने कवर की थी अपने पिछले सेशन के अंदर। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक्स की तरफ। ओके, सो आर यू गाइस रेडी फॉर द टुडेस टॉपिक्स? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स इफ यस। सो आर यू गाइस रेडी? Okay, so let's start the today's session with the very first topic, that is aspirational district mineral foundation program. So guys, ये program recently launched किया गया है by the Ministry of Mines. So Ministry of Mines has launched aspirational DMF program, and they have also come up with the operational guidelines of the DMF program so that we can align these activities under this part with the activities of the district mineral foundation with aspirational district program and the aspirational block program. So aspirational district program, aspirational block program क्या है ये भी हम कवर करेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स के अंदर। ओके, सो अभी के लिए याद रखना है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया, तो जरूर माइंस से रिलेटेड कुछ होगा, राइट? सो वो क्या है ये हम कवर करते हैं अपने आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। सो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, अब ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है? So basically we can say that it is a kind of body which was being created. अब क्यों क्रिएट किया गया? So दोस्तों, we all know that जब भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइनिंग एक्टिविटीज को शुरू किया जाता है, so there are so many communities who were earlier living in those particular areas. So now those communities have got impacted. So for the welfare and for the interest of the people who were living there, so the communities who are living even around that particular district and the mining site, so basically उनके लिए कुछ हम वेलफेयर एक्टिविटीज कर सकें, that's why डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वाज बीन क्रिएटेड। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को क्रिएट किया गया 2015 के अंदर थ्रू एन अमेंडमेंट टू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया के अंदर माइंस के रिलेटेड जो भी रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो भी रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, माइनिंग एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है दोस्तों, सो वो किस एक्ट के अंदर की जाती हैं? दे आर बेसिकली रेगुलेटेड बाय माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को सेटअप किया गया और ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल था कि एक नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी फंड होगा विच इज एस्टैब्लिश्ड इन ईच माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट विच इज बीन इंपैक्टेड बाय द माइनिंग, सो बेसिकली वहां पर ये डीएमएफ को सेटअप किया जाएगा, राइट? और इस डीएमएफ का क्या कंपोजिशन रहेगा? इसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डीएमएफ को पावर्स दीजिए एंड इट विल बी कंडक्टिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट? सो एक नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में डीएमएफ क्या काम करेगा, क्या क्या रूल्स है, नहीं। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग से रूल्स बनाएगी फॉर द डीएमएफ। ओके, सो स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड अंडर द एक्ट to define the composition and functions of DMFs। आप देख सकते हैं कंपोजिशन और फंक्शन को डिफाइन करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। Now these are to be spent at the district level in accordance with the प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना गाइडलाइंस, राइट? और एट प्रेजेंट अगर हम देखें जो ओवरऑल फंड है दोस्तों, जो ओवरऑल फंड है अंडर द डीएमएफ, इट हैज क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ रुपीस। तो 1 लाख करोड़ रुपीस को ये फंड बेसिकली क्रॉस कर चुका है। दैट मींस दिस इज द फंड दैट वी आर हैविंग राइट नाउ व्हिच वी कैन यूज फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द कम्युनिटीज इन दिस माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो दोस्तों, अब ये इसकी कहानी क्या है? दैट इज द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। सो बेसिकली हमने देखा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। So I already told you that when a mining activity is being started at one of the district, what exactly happens is there are some kind of environmental aspects as well which are being getting damaged in that particular area, right? So काफी चीजें हैं जो इम्पैक्ट होती है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, वो कम्युनिटीज को रिलोकेट करना पड़ रहा है, कम्युनिटीज इम्पैक्ट हो रही है, उनके लाइवलीहुड्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई so government just thought that why not we are having a particular scheme which is basically working for the benefits of these people who were earlier living there. So that's why India come up with the Prime Minister खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। खनिज क्षेत्र दैट मीन्स और जहां पर दैट इज हम माइन को कहते हैं खान, राइट? तो खनिज क्षेत्र जहां पर माइनिंग हो रही है वहां पे वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए हमने इस स्कीम को लॉन्च किया, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सो बेसिकली अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, दिस स्कीम इज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ओनली।
तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करता है एंड इट टेक्स केयर of the different activities which are being done for the welfare of the communities in these mining districts. I hope this part is clear till now, right? Now let me tell you here, ये जो फंडिंग है दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर हमने देखा कि एक फंड बनाया गया. दैट फंड विल बी फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर टेकिंग फॉर दीज पर्टिकुलर कम्युनिटीज. ये पैसा कहां से आ रहा है? सो बेसिकली जो हमारे माइनिंग लीज होल्डर्स हैं, वो कुछ रॉयल्टी देते हैं. सो देयर आर सम सर्टेन परसेंटेज ऑफ द रॉयल्टी दैट दे आर गिविंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, राइट? क्योंकि माइनिंग की वजह से काफी एरियाज इंपैक्ट हुए, कम्युनिटीज इंपैक्ट हुई. सो बेसिकली उसके लिए हमने अलग से पैसा निकाल के रखा सो दैट वी कैन यूज दैट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. सो बेसिकली यहाँ पर 70% जो फंड है आपका वो हाई प्रायोरिटी एरियाज को दिया जाता है एंड द 30% ऑफ द फंड इज बीन गिवन टू अदर प्रायोरिटी एरियाज. अब आपकी हाई प्रायोरिटी एरियाज क्या हो सकते हैं गाइस? इफ यू आर लिविंग एट सम काइंड ऑफ लोकेलिटी, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट पर्टिकुलर पार्ट दैट वी कैन डू देयर. तो क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है जो आपके लिए हाई प्रायोरिटी पर है? दिस कैन इंक्लूड हेल्थ. प्लीज टेल मी इफ डू यू एग्री विद मी, इज हेल्थ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? यस. सो हेल्थ इज देयर, एजुकेशन इज देयर, ड्रिंकिंग वाटर इज देयर, राइट? सो ऐसे एक्टिविटीज पर 70% of the fund we are using. Now the 30% is basically done for the infrastructure. For example, irrigation facilities proper मिल रही है, नहीं मिल रही है, right? Watershed development हो रही है, नहीं हो रही है. So infrastructure activities पर कुछ 30% रहेगा, 70% रहेगा आपकी major important amenities पर. I hope this is clear. So basically under the प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, what exactly we are trying to do is we are focusing on the key socio-economic indicators. ये सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हैं? द इंडिकेटर्स विच आर लाइक हेल्थ, एजुकेशन और ड्रिंकिंग वाटर, राइट? आफ्टर दैट देयर आर सम नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उनको मिटिगेट करना भी जरूरी है. सो वी विल बी टेकिंग द स्टेप्स टू मिटिगेट द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ द माइनिंग विच आर टेकिंग प्लेस देयर, राइट? Apart from that, their livelihood was also been impacted due to the initiation of these mining activities, right? कुछ लोगों को चलो माइंस के अंदर भी जॉब्स मिली, बट काफी लोगों ने अपनी जॉब्स खोई भी होगी जो वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरियाज थे. सो बेसिकली वी विल बी प्रोवाइडिंग द सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटीज हु आर अर्लियर लिविंग देयर. आई होप दैट टिल नाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो दैट्स ऑल दैट वी नीड टू कवर फ्रॉम हियर. तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को हमने यहाँ पर थोड़ा ओवरऑल तरीके से कवर कर लिया, राइट? कि क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रायोरिटी एरियाज हैं, किस रेशो के अंदर फंडिंग को एलोकेट किया जाता है फॉर द डिफरेंट एरियाज. नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी हैव डन इज जो डीएमएफ की एक्टिविटीज हैं हमने उनको अलाइन किया विद द डीएमएफ प्रोग्राम विद द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है दोस्तों? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इज दैट पर्टिकुलर यूनिट of the administration in our particular area which has been identified by the government of India as a relatively underdeveloped district. तो वो बेसिकली underdeveloped है वो पर्टिकुलर एरिया. अगर हम की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सो इस सभी को हमने यहाँ पर कैटर किया. तो इन सभी पैरामीटर्स या फैक्टर्स हम कहें तो इनके सामने अगर कोई पर्टिकुलर एरिया अंडर डेवलप्ड है तो उसको हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा, राइट? सो वी जस्ट थॉट दैट व्हाई नॉट वी जस्ट फोकस मोर ऑन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट सो दैट वी कैन रियली डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स. सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द आइडिया ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. सो दिस वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2018 बाय द नीति आयोग एज द नोडल एजेंसी. और ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर था दैट वी वांट टू ट्रांसफॉर्म We just want to transform the districts with relatively poor socio-economic indicators. We have already covered what are the socio-economic indicators, right? After that, we want to improve the quality of life. The people who are living there, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना है. कैसे हम कर पाएंगे? मान लीजिए आपके घर में गंदा पानी आता है, आप पी नहीं पाते पानी, राइट? सो बेसिकली वहां पर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. मान लीजिए आपके एरिया में हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो दूर शहर में जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए. सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स ऑन विच वी विल बी वर्किंग अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो की सोशियो इकोनॉमिक एरियाज पर हम काम करेंगे सो दैट वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स by focusing on inclusive development and the governance.
और टारगेट इसके अंदर क्या था, द डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बेस्ड ऑन 3 कोर प्रिंसिपल्स, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड द कंपटीशन। अब कन्वर्जेंस किसका होगा, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको हम कन्वर्ज करेंगे, सो दैट जिनके हमारे ऑलरेडी अलाइंड प्रिंसिपल्स हैं, अलाइंड टारगेट्स हैं, उनको हम एक तरीके से थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें, सो दैट वी कैन गेट बेटर एफिशिएंसी इन दिस एरियाज। Then collaboration between the Prabhari officers and the district collectors. Competition among the districts through the monthly delta ranking. So what we can do कि districts के अंदर हम एक competition create कर सकते हैं, so that now we are having the competitive ability, so that कि हम अपने ऊपर ज्यादा काम कर सके, so that हम दूसरे district से आगे निकले। तो इसमें क्या होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा। सो दैट वाज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, राइट? नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर द डिफरेंट इंडिकेटर्स दैट वी आर यूजिंग हियर? जस्ट रिमेंबर, एडीपी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज हैविंग हाई फाई, राइट? हम चाहते हैं कि वहां के जो लोग हैं जो पीछे रह गए वो भी हाई फाई करना सीख जाए। कैसे करेंगे? जब उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन अच्छी होगी। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। एच स्टैंड्स फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली इनके वेटेजेस भी हमें याद करने चाहिए, राइट? सबसे तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक लाइन में याद करना है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हाई फाई, HEAFI। तो ये क्या होगा, health and nutrition is the first part, that is having 30% weight. Then education having 30% weight, agriculture and water resources having 20%, financial inclusion and skill development having 10%, and infrastructure is also having 10%. So these are the major areas under which we have basically 49 key performance indicators, right? So 5 socio-economic theme के अंदर हमने 49 indicators को compile किया, and we are focusing overly majorly on these particular areas. So that's what you need to remember here from the examination point of view. Okay? Aspirational district program दोस्तों, तो अभी हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने काफी अच्छी अचीवमेंट हासिल की, राइट? सो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना अब हम डिस्ट्रिक्ट से और नीचे जाते हैं, थोड़ा सा और रूट पर जाते हैं और हम एक ब्लॉक को टारगेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द आइडिया ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सक्सेस पर हमने लॉन्च किया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को इन ईयर 2023। अगेन नीति आयोग वाज द nodal agency which is responsible for the implementation of the aspirational block program. Again we were having that similar objective. Basically जो areas हमारे की socio-economic indicators में पीछे रह गए हैं उनको हम फोकस करेंगे। बट यहां पर क्या है, there is a target. What is the target? We are focusing on 500 underdeveloped blocks. तो 500 जो सबसे ज्यादा underdeveloped blocks हैं उनको टारगेट किया जाएगा, सो दैट सबसे पहले वहां पर डेवलपमेंट की जाए, वहां पे जो लाइफ है लोगों की उसको बेहतर किया जाए। सो बेसिकली वी आर एनहांसिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दीज 500 अंडरडेवलप्ड ब्लॉक्स सो दैट वी कैन स्ट्रेंथन हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड सोशल सर्विसेज इन दीज एरियाज। सो यहां पर क्या, बेसिकली इट मिरर्स द सक्सेसफुल मॉडल ऑफ द एडीपी विद द लोकलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन। सो दोस्तों जैसे हमने थोड़े दिन पहले किया था लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो वैसे ही इस लोकल एरिया के जो टारगेट्स हैं वहां पर जो इन एरियाज पर काम करना चाहिए, वी हैव बेसिकली आइडेंटिफाइड देम। एम्फेसिस ऑन द डेटा ड्रिवन प्लानिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके जरिए वी विल बी एबल टू अचीव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दीज आर? अगेन देयर आर 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अंडर दिस, which we have categorized in the 5 sectors with the following weightages. तो यहां पर वेटेजेस क्या है दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज आर एब्सोल्युटली द सेम। तो पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा था, बट अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फॉलो करेंगे। दैट मींस एक ब्लॉक के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए, सो 15% फॉर दैट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द सोशल डेवलपमेंट इज एट 5%. So this basically totally makes it 100%, right? So these are the 2 important parts that we need to cover from here. From the DMF we have covered aspirational district program and aspirational block program. तो 2 काफी important programs को हमने cover किया which can be asked in the examination. So if I ask you guys that in which area the aspirational district program was been launched, can anybody tell me that? In which area, in which year aspirational district program was been launched? It was launched in year 2018. Right? And what are the 5 sub themes
of these socio-economic indicators which have been used in order to focus on the population living in these areas. What exactly is that? Just remember, hi-fi, right? Health, education, agriculture, financial inclusion, and infrastructure. So this is it. When it comes to the aspirational district program, aspirational block program, sorry, it was launched in which year? It was launched in year 2023. Again, Niti Aayog is in the picture, right? So if I ask you what are the different particular themes or the sectors on which we are targeting here, again there are 5: health, education, agriculture. But now here infrastructure is not there. There is basic infrastructure, and we are having the social development, right? We are biased about this part, right? So for these development of the blocks. So are you guys able to understand it? Will you guys be able to retain it from the examination point of view? Please tell me in the chat box. If yes, please give me a thumbs up. If you are having an issue, please tell me and I will be making it more easier for you. I hope that सभी को ये चीज समझ में आई है, right? Everybody saying that yes, it is easily understood. Okay, so let's move on to the next part of the news article. So guys, अभी हमने बात करी aspirational district program की. Let me tell you here, recently the first ever science center in an aspirational district was being established. Where exactly it was established? That is very important. क्यों? क्योंकि सबसे पहला ऐसा सेंटर था. It has been established in Dholpur, Rajasthan. It has been developed by Department of Biotechnology along with the National Institute of Immunology, National Science Center. Okay, and this supports the Vigyan Setu concept. So guys, what exactly is the Vigyan Setu concept? ये question आपके mind में आ रहा होगा, right? So it is one of the initiative launched by the government under which we are basically what we are doing. The high school teachers, they are making some simple science based experiments. और उन सिंपल साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम बेसिकली जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं. साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स बनाए और उसके जरिए डेली लाइफ के अंदर कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है ये हमने दिखाया. सो दैट वी कैन इंस्पायर द पीपल, वी कैन embed curiosity among the young people so that they can take more interest and incline towards the science. That's why Vigyan Setu has been launched, right? So you can see first ever science center kahan par hai? Rajasthan mein hai. So if a question will be asked where exactly it is in Dholpur, Rajasthan. ठीक है? Absolutely right. I can see that yes, people are giving and understanding the things very clearly. That's good. बढ़ते हैं next part की तरफ दोस्तों, and today we will be covering the European Union also. So what we have seen recently, Bulgaria has announced that it will be adopting euro as its particular official currency. Earlier its particular currency was लेव. पहले लेव इसकी करेंसी थी, बट अब इसने यूरो को अडॉप्ट कर लिया है. और ये जो अप्रूवल है इसको मिला कहां से? यूरोपियन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर्स से. ठीक है. सो इसके साथ ही 21st मेंबर बन चुका है यूरोपियन यूनियन का, एंड इट इज द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन. सॉरी, नॉट द 21st मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट इज द 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन. ये यूरोजोन क्या है दोस्तों? सो यूरोपियन यूनियन के अंदर वो सभी कंट्रीज जिन्होंने यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट किया है, सो दीज आर कमिंग अंडर द यूरोजोन. आई होप दिस इज क्लियर. सो यूरोजोन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, दीज आर दोस कंट्रीज विच आर हैविंग ऑफिशियल करेंसी एज यूरो. After that, Bulgaria will be switching from its national currency lev to the euro. काफी इंपॉर्टेंट है, पहले कौन सी करेंसी थी, अब किस करेंसी पर आ रहा है, और एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर आ रहा है. दैट रेट इज बीन गिवन हियर. ओके, बुल्गारिया ऑलरेडी एक मेंबर है यूरोपियन यूनियन का. लास्ट कंट्री जिसने यूरो को अडॉप्ट किया था एज इट्स ऑफिशियल करेंसी, इट वाज क्रोएशिया. तो क्रोएशिया ने 2023 के अंदर यूरो को अडॉप्ट किया था एज इट्स ऑफिशियल करेंसी, एंड नाउ इट इज बुल्गारिया व्हिच हैज आल्सो अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर करेंसी एज इट्स ऑफिशियल करेंसी. Now the next important thing is that we need to see about the European Union. European Union क्या है दोस्तों? European Union is a political economic union of 27 European countries. Which are these 27 European countries? Let me tell you, you are not required to retain the name. I have shown you the map here which includes different countries like France, Germany, Poland, Lithuania, Denmark, Sweden, Finland, Norway, Switzerland, Italy, Spain. So there are 27 countries which are the part of the European Union, and Bulgaria is also one of such country which has adopted its official currency as euro. Okay, so अगर हम बात करें यूरोप की, so दोस्तों बहुत सारे लोग यूरोप जाते हैं, राइट? कहते हैं बहुत मस्त जगह है,
लेट मी टेल यू हियर, ऐसी एक मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंडर यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। मस्ट जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन की गई एंड विद दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड। व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड? यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। फर्दर इसको स्ट्रेंथन किया गया विद द ट्रीटी ऑफ लिस्बन। आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में थोड़ा सा और बैकग्राउंड से आता है तो डेफिनेटली दिस कैन बी आस्क्ड, ओके। सो ये एक सिंगल मार्केट की तरह ऑपरेट करता है एंड अ कस्टम यूनियन। लेट मी टेल यू हियर दैट इट इज आल्सो हैविंग द शेयर्ड मॉनेटरी पॉलिसी। So in India, like we are having every year bi-monthly monetary policy committee meet, right? हमारे पास एक अपनी monetary policy committee है जो बेसिकली देखती है इंडिया का क्या इन्फ्लेशन टारगेट है उसके बैंड के अंदर, ताकि इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल रहे। यहाँ पर रेपो रेट में उतार चढ़ाव होते हैं तो उसको बेसिकली डिसाइड करती है, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, सो देयर इज अ शेयर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी देयर, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी उनकी शेयर्ड है सभी इन कंट्रीज की। आफ्टर दैट देयर इज अ शेंजन एरिया। सो दोस्तों शेंजन एरिया क्या है? सो हमने बात करी यूरोजोन की। यूरोजोन वो पूरा एरिया है, द कंट्रीज व्हिच हैव अडॉप्टेड यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू द शेंजन एरिया, तो शेंजन एरिया में इन्होंने क्या किया कि देखो हमारा एक अच्छा ग्रुप तो बन गया है, राइट, हमारी दोस्ती अच्छी हो गई है, तो क्यों ना आसपास अगर किसी को जर्मनी से पोलैंड जाना है, पोलैंड से जर्मनी आना है, तो बेसिकली आराम से आ जा सकते हैं, राइट। तो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये जो इनकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, इनको खोल दिया लोगों के लिए कि आप इजीली आ जा सकते हो, लाइक इंडिया और बांग्लादेश से लोग इजीली आए जाएं, राइट। तो ऐसा एक सिस्टम क्रिएट किया इन द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। सो बेसिकली शेंजन एरिया इज दैट एरिया वेयर दे हैव ओपन्ड देयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और यहाँ पर फ्री फ्लो है पीपल का, कभी भी आ जा सकते हैं लोग, देयर इज नो such kind of restrictions there. So that is Schengen area which allows passport free travel, guys. पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। जबकि यूरोजोन इज फॉर्म्ड इन 1999, comprises 21 countries using euro, जो कि सेकंड मोस्ट ट्रेडेड और रिजर्व करेंसी है ग्लोबली। आई होप विद दिस एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आया होगा अबाउट द यूरोपियन यूनियन, राइट। काफी बार पढ़ा हमने यूरोपियन यूनियन। एक और चीज रह गई दोस्तों, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी की ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब कौन बनाता है ये मॉनेटरी पॉलिसी? दैट इज, आपने काफी बार सुना होगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में, राइट। सो दिस इज अ बैंक व्हिच बेसिकली कम्स अप विद द मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच हैज बीन फॉलोड बाय द होल यूरोपियन यूनियन। I hope this is clear to everybody. If yes, please give me a thumbs up in the chat box so that we can see that yes, you are able to understand it. If I ask you, what is the name of the treaty under which European Union was been established? What is that? Just remember, Maastricht Treaty, right? So this is the name of the treaty under which it was established in 1993. How many members are there in the European Union? There are 27 European members. And which was that country which exited the European Union? What exactly it was, guys? You must remember about the Brexit referendum. तो ब्रेक्सिट के अंदर क्या हुआ था? ब्रिटेन ने एग्जिट किया था। ब्रिटेन ने एग्जिट किया था कहां से? यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया था, राइट। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर एंड रिटेन इट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज यूएचसी पीयर्स। सो यूएचसी पीयर्स, इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज। तो रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया। सो दोस्तों ये क्या है? ये एक नेटवर्क है जहां पर हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं। जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, दे कैन बेसिकली शेयर द नॉलेज विद ईच अदर, सो दैट जो सभी हमारी कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन, उनके वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो जाए, हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो जाए। आपस में अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हमारे एक दूसरे से नॉलेज शेयर करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज नॉट हियर इन इंडिया, और जो दूसरी कंट्री है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा, तो इंडिया में भी उसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग अंडर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क दैट वी हैव कम्ड अप विद द यूएचसी पीयर्स, दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पीयर्स, ओके। सो इसको लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया ड्यूरिंग द इंस्पायर फोरम। सो इंस्पायर health system in Asia and the Pacific Health Forum was being held recently, and here INSPIRE stands for Inclusive, Sustainable, Prosperous and Resilient Health System. काफी लो चांसेस हैं कि इस इंस्पायर की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाएगी, राइट। बहुत ही लो चांसेस है, बट स्टिल याद रखिए इंस्पायर को, इंस्पायर नाम याद रखिए। आई थिंक दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू रिटेन इट, ओके। सो हेल्थ इनोवेशन को बूस्ट करना हमारा टारगेट है विद द डिजिटल कोऑपरेशन अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन।
सो इससे क्या होगा, नॉलेज शेयरिंग हो पाएगी ऑन द हेल्थ फाइनेंसिंग, सर्विस डिलीवरी, इनोवेशन एंड द डिजिटल सॉल्यूशंस। सो ये एक ऐसा हब ऑलरेडी टोक्यो में लॉन्च किया जा चुका है। अब एडीबी ने इसको एक लॉन्च किया है, यूएचसी पीयर्स को, ऑन द सिमिलर लाइंस। ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन that as we are covering about this UHC PEERS and it has been launched by the ADB, so ADB को cover करना बहुत जरूरी है। So now we will be covering the ADB, that is Asian Development Bank, which was launched in year 1966. You have to tell me here who is presently serving as the president. Who is presently serving as the president of ADB? कौन है प्रेसिडेंट एडीबी का? जल्दी से मुझे बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो एडीबी की बात करते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? मनीला, फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर है। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में, दैट्स व्हाई एडीबी वाज बीन लॉन्च्ड एंड टोटल मेंबर्स आर 69 एंड इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर। India is one of the founding member of the Asian Development Bank. Now when it comes to the person who is basically serving as the president of ADB, that is Masato Kanda. Absolutely right. Masato Kanda is the right answer. The person who is serving as the president of Asian Development Bank, right? ADB 1966 में आया, मनीला फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर है। मसतो कांडा इज द प्रेजेंट सर्विंग प्रेसिडेंट है। एब्सोल्युटली राइट। सो दीपक, गुरुराज, हर्षल, शनिका, रोवर, सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। वेल डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, International Solar Alliance, you all know that it was been initiated by India and France together during one of the conference, and now 7th regional committee meeting has been announced of the International Solar Alliance and it will be hosted by Colombo, Sri Lanka. तो रीजनल कमिटी मीट कहां होगी? कोलंबो, श्रीलंका के अंदर होगी, क्योंकि ये एशिया और पैसिफिक रीजन पर फोकस कर रही है, राइट। So theme of this event is advancing solar cooperation across region of diversity and opportunity. तो इसकी थीम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, being frank here, इसकी थीम इतनी ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्योंकि ये 7th रीजनल कमिटी मीट कौन होस्ट करने वाला है? श्रीलंका होस्ट करने वाला है। अगर ये आईएसए की एनुअल मीट होती तो उसकी थीम को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने याद किया ब्रिक्स समिट की थीम को, हमने याद किया था G7 की थीम को, तो इसीलिए उसकी थीम याद इंपॉर्टेंट है, बट इसकी थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आरसीएन को चेयर कौन करने वाला है? इट इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द रीजन एंड दैट इज श्रीलंका राइट नाउ। आप देख सकते हैं श्रीलंका का फ्लैग यहाँ पर है अलॉन्ग विद आईएसए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, it is that intergovernmental organization which was initiated by India and France together, and it basically promotes the deployment of solar energy across the world. और अगर हम बात करते हैं आईएसए की, कब लॉन्च किया गया था? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि पेरिस के अंदर हुई थी। और आईएसए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो टारगेट्स आईएसए के अंदर वो याद करना। वो क्या है? आईएसए के साथ बस याद रखिए 1000 नंबर को। 1000 number is the most important because 1000 strategy is there. What is that 1000 strategy? सबसे पहले, so in order to ensure that solar energy are being adopted by the different countries, important क्या है? Climate finance, उनको funding provide करना। तो कितना fund mobilize करना चाहते हैं हम इसके अंदर? $1000 billion, right? इसके अलावा, so as we are providing these climate finance, we are mobilizing the $1000 billion. Who will get the benefit of the solar energy? People will be getting the benefit. How many people we are targeting? Again, 1000 million people will be targeted here, right? And with this help of setting up the solar parks, we will be basically generating the solar energy. How much solar energy we are generating here? 1000 gigawatts of the solar capacity we will be generating and installing. After that, with the usage of the solar energy, we are basically moving from the conventional fuels, fossil fuels से हम एक renewable source पर जा रहे हैं, right? So basically इससे क्या होगा? कार्बन एमिशन कम होगा, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। सो बेसिकली कितना हम टारगेट कर रहे हैं? 1000 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम एनुअली कम करना चाह रहे हैं। तो दैट इज द 1000 स्ट्रेटजी ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर फ्रॉम हियर। सो इसका विजन है, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। मिशन इज एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल हैव अ लाइट। और दोस्तों यहां पर कहीं पर लाइट, वैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा, बट सूरज की रोशनी जरूर पहुंच रही है।
that area is getting the sunlight. So why not we just ensure that yes, every home is having a light, जितना भी दूर हो बट लाइट सबके पास पहुंचनी चाहिए, राइट, सो दैट वो भी इस तरीके से डिजिटली चीजों को साथ कनेक्ट हो सके, बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सके, अपनी डेली लाइफ को अच्छे से जी सके. सो अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम and the first international intergovernmental organization headquartered in India. Absolutely right. As of June 2025, ISA is having 123 members and signatory countries. At present, 123 member and signatory countries हैं under the ISA. If I ask you which country is having the presidency of ISA right now, let me tell you that अभी recently ये news में आया था, ISA की present presidency किसके पास है? So India is having the presidency here. And who is the co-president here? Co-president कौन सी country है? It is France. फ्रांस इज द को प्रेसिडेंट हियर. ठीक है, सो 2 साल के लिए इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम, हरियाणा. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हु इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द हेड ऑफ द आईएसए? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? आईएसए के हेड कौन है एट प्रेजेंट? हु इज सर्विंग एज द हेड ऑफ आईएसए? द पर्सन नेम इज आशीष खन्ना. आशीष, ISA, आशीष खन्ना इज द राइट आंसर. तो बहुत इजी याद करना, ISA याद है, बस इसको रिवर्स फॉर्म में ले जाओ, अगर याद रहे तो ठीक है, वरना आशीष खन्ना इज नॉट दैट अ बिग नेम टू रिमेंबर, राइट? ओके, आई होप दिस इज क्लियर. स्टिल मैंने एक आपको छोटा सा तरीका दे दिया, आप इसको याद कर सकते हो. इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक दैट पार्ट और नॉट. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द ISA. बढ़ेंगे अब हम अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ. दैट इज 134 सेशन ऑफ IMO, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का 134 सेशन हुआ लंदन के अंदर. If I talk about International Maritime Organization, my dear friends, IMO is a specialized United Nations agency which has been launched for the safety and security of the marine and the shippers, right? So 1948 के अंदर जेनेवा के अंदर a conference was held during which a convention was been adopted and it led to the establishment of IMO in 1948, right? So हमने थोड़ा historical background पढ़ लिया IMO का. अब बढ़ते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर क्या हुआ. इंडिया ने अपने जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम्स को यहां पर हाईलाइट किया. दैट इज सागर में सम्मान, जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने लॉन्च किया था. और इसके अंदर वी आर बेसिकली सीइंग दैट जो हमारे विमेन हैं, सो विमेन आर आल्सो टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मरीन इंडस्ट्री एंड वी हैव सीन दैट देयर इज अ 650% राइज इन द नंबर ऑफ इंडियन वुमेन seafarers in our nation. That is the achievement that we have got with the help of these particular initiatives that we have taken to have equality among the men and the women in the marine industry. Okay, that's all from here. Moving to the next part, that is the Coartem Baby. So guys, Coartem Baby is a drug which has been recently approved by the Swiss Medical Agency, right? So basically Swiss Medic ने इसको approve किया है. That is कोटम बेबी, जिसको हम रियामत बेबी के नाम से भी जानते हैं. दिस इज अ ड्रग फॉर द मलेरिया ट्रीटमेंट. दोस्तों पहले क्या होता था, इफ देयर इज अ न्यूबॉर्न बेबी एंड ही इज हैविंग मलेरिया, सो हम क्या करते थे, उसको कुछ डिफरेंट और डोजेज जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई हैं वो हम यूज करते थे इन बेबीज के ऊपर, विच ऑल्सो लेड टू द ओवरडोज. बट बेबी को कितना मलेरिया है, कितनी डोज वो ले सकता है, इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर वी कैन से डिस्कशंस वर देयर, राइट? और हमारे पास ऐसा कोई ड्रग नहीं था उस टाइम. तो अब फॉर दीज न्यूबॉर्न बेबीज वी आर नाउ हैविंग such a particular drug that we can use, and that is Coartem Baby. For the very first time in the history, for the newborns and the infants, we are having the first ever malaria treatment drug, that is Coartem Baby. If in the examination it has been asked what is the name of that drug which has been launched as the first such drug treatment for the malaria for the newborns and the infants, what will be the right answer? Right answer will be Coartem Baby. That is the right answer. Moving to the next news article, guys, and I think that now it has become the habit that wherever the Prime Minister Modi ji is going and he is getting the civilian honor. Just in the previous some days we have seen that Ghana has also given Modi ji its highest civilian honor. Now again we have seen that again we all know that Modi ji was he also addressed the BRICS summit, right? He went to Brazil, he went to Namibia and some other countries. So right now we have seen that Namibia has given its highest civilian honor of the most ancient Welvicia Mirabilis to Narendra Modi ji, the Prime Minister of India.
and during the visit some kind of MOUs have also been signed. And a very important part that we need to highlight here, that is नामीबिया वो पहला देश है दोस्तों जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, आजकल आप यूपीआई करते हैं ना, जब भी मार्केट में जाते हैं, यू नीड टू परचेज समथिंग, यू जस्ट डू यूपीआई पेमेंट, राइट? सो यूपीआई को रोल आउट किया करने वाला पहला देश था नामीबिया. Oh, this was the first country globally to sign the licensing agreement to adopt UPI. Apart from that, एक MOU भी साइन अप हुआ है हमारा to set up entrepreneurship development center in Namibia. During this visit, we have signed this particular MOU with the Namibia. Okay, so that's all. Moving ahead, another highest civilian honor, and this time from Brazil, which has been given to Narendra Modi ji, and this is the National Order of the Southern Cross, which has been given to Narendra Modi ji for strengthening India-Brazil ties. And during this particular visit, India has also committed that we will be enhancing our bilateral trade from the value of 12.2 billion to 20 billion by 2030. अगले 5 साल में, that means 2030 तक हमारा जो बायलैटरल ट्रेड होगा ब्राजील के साथ, दैट विल बी $20 बिलियन. ये हमारा टारगेट हमने सेट किया है. ओके, दिस इज समथिंग दैट वी शुड रिमेंबर हियर. और ये सदर्न क्रॉस, नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किससे मिला है? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्राजील. इट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्राजील. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, 100th विंबलडन विक्ट्री. सो गाइस, नोवाक जोकोविक, you all know, a swashbuckling tennis player, and he has become the third player in the history of Wimbledon to reach 100 victories. 100 मैच जीतने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं विंबलडन की हिस्ट्री के. What is Wimbledon? Wimbledon is the oldest tennis tournament that we see, right? और अगर हम बात करते हैं ये कहां पर खेला जाता है दोस्तों? लंदन में खेला जाता है. विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है. और नोवाक जोकोविक की अगर हम बात करें तो उन्होंने 100th विक्ट्री हासिल की. ही हैज बिकम द थर्ड प्लेयर. इससे पहले अगर हम बात करें, मार्टिना नवरातिलोवा एंड रॉजर फेडरर, these are the two people who have achieved this particular milestone in Wimbledon, right? So apart from that, अगर हम बात करें नोवाक जोकोविक की, so previous two Wimbledon titles की अगर हम बात करते हैं, he lost the title to कार्लोस अल्कराज. कार्लोस अल्कराज से लास्ट 2 टाइम से ये टाइटल हार जा रहे हैं इन द फाइनल्स. ही इज बीन डिफीटेड बाय कार्लोस अल्कराज, राइट? और दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू सी. बट हाँ, आगे आने वाले टाइम में विंबलडन के सभी विनर्स को हम कवर करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम इवेंट दैट वी सी along with the US Open, French Open and Australian Open. Wimbledon is there. These are the 4 Grand Slam events which are really important to be covered from examination point of view. Even RBI में भी हमने इसके ऊपर questions देखे हैं अपने एग्जाम के अंदर. ठीक है, I hope this is clear. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर, that is the CONCACAF Gold Cup. So Mexico has defeated the United States to win the 10th time CONCACAF Gold Cup. अब ये क्या है दोस्तों? So CONCACAF stands for Confederation of the North America, Central America and the Caribbean Association of the Football. ठीक है, so Confederation of Central America, North America and the Caribbean Association of Football, that is the CONCACAF Gold Cup. ठीक है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है दोस्तों. इट इज रिलेटेड टू द फुटबॉल एंड मैक्सिको हैज डिफीटेड यूएस एंड इट हैज वन इट्स 10th ever title. That's it that we need to cover here. ये एक बायएनुअल इवेंट है, 2 साल में एक बार इवेंट ये कंडक्ट किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट, अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग 2025. सो अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग 2025 को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया एट मोदी नगर इन उत्तर प्रदेश. एंड दिस इज अस्मिता की फुल फॉर्म यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अस्मिता स्टैंड फॉर अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन, दैट इज अस्मिता. ठीक है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ अस्मिता. ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अंडर द खेलो इंडिया स्कीम और इसको 2021 में लॉन्च किया था सो दैट हम अपने फीमेल स्पोर्टिंग टैलेंट को नर्चर कर सके, आइडेंटिफाई कर सके अक्रॉस द मल्टीपल स्टेज ग्रुप्स, अक्रॉस द जोनल एंड द नेशनल लेवल लीग्स. I hope this is clear, guys. So this has been launched in Uttar Pradesh. So after that we are having the Nistar, which is basically delivered by Hindustan Shipyard Limited to the Indian Navy. ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल है. तो डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार, निस्तार नाम याद रखिए, डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार. इट हैज बीन गिवन टू इंडियन नेवी बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड.
That's it here. Moving ahead to the last news article of the today's session, that is on Vatsal. Vatsal दोस्तों एशिया का oldest elephant, and she was brought from Kerala and she just passed away recently. Let me tell you that Vatsal's age was more than 100 years. That's why it has been considered as Asia's oldest elephant which has passed away. She was in Panna Tiger Reserve in Madhya Pradesh. तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में, let me tell you here, यहाँ पर वत्सल भी आपके पूछा जा सकता है. What is the name of that Asia's oldest elephant which has passed away recently? What will be the right answer? The right answer will be Vatsal. But sometimes what examiner do is it just say that Vatsal, Asia's oldest elephant, passed away at Panna Tiger Reserve. In which state Panna Tiger Reserve is located? This can also be asked in the examination. So what will be the answer to that question? Please tell me in the comment section. The right answer to that question will be Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is the right answer. Okay. So my dear friends, with this we are done with the important news articles of 8th to 9th of July 2025. I hope that आप सभी ने काफी एंजॉय किया होगा आज के सेशन को. हमने काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को, इनिशिएटिव्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, and the important happenings which have happened across the world. Let me tell you another important things, my dear friends, and that is basically that अगर आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे ना, इट विल बिकम अ बर्डन ओवर यू. एक बर्डन सा लगेगा कि यार ये भी याद करना है, ये भी याद करना है. ब्रिक्स समिट हुई, आईएसए की रीजनल कमेटी मीट हुई, कौन प्रेसिडेंट है, आईएसए का कौन प्रेसिडेंट है, तो सब कुछ याद करना है, राइट. बट अगर आप इसको अपनी अवेयरनेस के लिए करेंगे, अगर एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ द नेशन के तौर पे करेंगे, सो बेसिकली दिस बर्डन विल गेट लोअर डाउन, राइट. सो अपनी अवेयरनेस के लिए ज्यादा चीजों को कवर कीजिए. लेट मी टेल यू दैट इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू टू कवर दीज करंट अफेयर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम के अंदर इन करंट अफेयर्स पर क्या आएगा, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. तो क्यों ना फटाफट कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लें, सो दैट we can see and we can ensure that yes, we are able to retain all the important information. Now you need to tell me here that what is the right answer to the first question on the district mineral foundation. So whenever these questions are there, I always tell you what is the approach to see this question. First thing is identify the central topic. Second thing, identify the demand of the question. Third thing is to focus on the keywords. So central topic is district mineral foundation. We need to identify which statement is correct here. तो हमें correct statement को identify करना है यहाँ पर, right? So the third thing is keywords पर focus करते हैं, फटाफट करते हैं. पहली statement, district mineral foundation established as a statutory fund 2015 में बना था through the MMDR Act 1957, which is absolutely right. Second statement, introduced operational guidelines under the Aspirational DMF program. This will align initiatives with the goal of ADP and ABP. Is the statement right or wrong? The statement is absolutely right here. Third statement, composition and the functioning framework of the DMF is uniformly governed and regulated by the central government across all the states in India. तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है डीएमएफ के सभी फंक्शनिंग फ्रेमवर्क को. इज इट राइट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज द पावर हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स कि भैया अपना अपना देख लो, आपको कैसे काम कराना है डीएमएफ से, हाउ यू वांट डीएमएफ टू वर्क, जस्ट सी योरसेल्फ, राइट. वी हैव गिवन यू द पावर. So this statement is incorrect. Right answer will be option A, that is 1 and 2. Is it clear? Everybody clear with this? How we need to identify the right answer? How we need to focus on the keywords here? हर एक कीवर्ड पर हमने हर वर्ड पर फोकस नहीं किया, बट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया और उन पर फोकस किया while covering this question. And that's what we are required to do from the examination point of view, right? I hope this is clear. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन. और यहां पर 3 fill in the blanks आपको आइडेंटिफाई करना है सही आंसर क्या है. सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा कंट्री है विच इज बेसिकली अडॉप्टेड द यूरो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर, वो कौन से नंबर का मेंबर बना है टू बिकम द यूरोजोन मेंबर, राइट. एंड द थर्ड थिंग, कौन सी करेंसी पर था वो पहले उसकी ऑफिशियल करेंसी क्या थी जिसको अब वो चेंज करेगा टू यूरो. What is the right answer? Bulgaria is the country. It has become the 21st member and it is switching from its official currency lev to euro. So option A is the right answer. I can see in the chat box everybody giving me option A is the right answer. Yes, absolutely right. Rover, Harshal, Muskan, Gururaj, Shanika, guys, well done. Abhinay,
Muskan, everybody has given the right answer. Yes. Well done, guys. बढ़ते हैं next question की तरफ. First ever malaria treatment drug for the newborn babies and the infants. What is the name? It is very easy. I think it is a halva question for all of you. What is the right answer? The right answer is Coartem Baby. Option C is the right answer. So option C, Coartem Baby is the right answer, which is for the malaria treatment drug. That's it. So guys, with this we are done with all the important questions here. I know the number of questions are quite less, right? But do not worry. I think it gives you the idea that how you need to identify the right answer in the examination and what kind of question can be asked, on which line the question can be asked. ये सभी चीजें हमने देख ली, right? अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं छोड़कर जाता हूं. The question is on the first ever science center in an aspirational district. आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है in the comment section and you need to identify the correct statement here. तो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है और बताना है क्वेश्चन का आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एंड द पीपल हु विल बी गिविंग मी द राइट आंसर, दे विल बी द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ आवर टुडे सेशन. अगर लास्ट सेशन की बात करते हैं तो स्टार परफॉर्मर्स कौन से थे? जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट के क्वेश्चन को सही आंसर किया. एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन वाज ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 only. And the people who are the star performers, you can see a long list we are having. गुरुराज, विश्वजीत, हरीश, सिद्धार्थ, सांची, शिखा, मयंक, रोशु, अनुष्का, हरीश, देन सिंधु, आशीष, गौतम, एग्रो, अमीशा, अदिति, संजू, शिल्पा. Guys, I just can't take the name of all the people, but I'm really glad to see and I'm proud of all of you that yes, you are giving the right answers. और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन है और हर रोज उनका आंसर आता है, हर सेशन में उनका आंसर आता है. Guys, let me tell you, जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बूस्ट हुआ होगा. अगर हुआ है, थोड़ा सा भी हुआ है, तो प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, राइट? सो गाइज, वेल डन एंड कीप इट अप. एंड इफ यू ऑल्सो वांट योर नेम टू बी मेंशन्ड हियर, प्लीज make sure that you are giving me the answer in the comment section. And still, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe to it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. Apart from that, अगर आपको इस सेशन की रिवीजन करनी है, जो कि आपके लिए मैंडेटरी है कवर करना, राइट? रिवीजन इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू. कहां से रिवीजन करेंगे? पीडीएफ से. पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करेंगे? इसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए. बट लेट मी टेल यू, 24 आवर्स के अंदर पीडीएफ आपको मिलेगी. अभी देखेंगे तो अभी नहीं मिलेगी, राइट? कल तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन गाइस. आई बिलीव कि आज का सेशन आप सभी के लिए यूजफुल एंड फ्रूटफुल रहा. एंड यस, डेफिनेटली इसी तरीके से सेशंस को अटेंड कीजिए. प्लीज एंश्योर दिस दैट यू आर स्टार्टिंग विद योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन. अगर एक अभी मन में डाउट है कि यार कब करे करंट अफेयर्स की तैयारी, दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम. So please ensure current affairs preparation अपनी start कीजिए अच्छे से. This is the high time for starting with the current affairs preparation. Right now we can see that exam is really very near. काफी forms आ चुके हैं. IBPSPO, SBI PO, PFRD exams are already out, guys. So please ensure that there are so many opportunities that are there for you, waiting for you to become the next officer. Why not make the most out of it, right? So guys, now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.